morning, Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Very good morning. Good Good morning, morning. Vijay sir. Good morning. morning, Very good Sarita morning, ji. everyone. Good So morning. Sarita ji's good morning Good awakens morning, everyone. Yes. Awakening good morning. Yes. Good morning. Very good morning. Tone is Yeah. beautiful. Very good morning. So we are very happy, Sanju Baba, you're reading today after a very long time, quite a few months. You're still in Bangalore? Yes, ma'am, I'm still in Bangalore. Okay. Yes, so we are on to our concentrated gratitude days now. So हमने first chapter में counting my blessings किया था, which is our routine now. Till the last day of our life, we have to be doing that. And then magic rock practice जो हमने कल किया था, that also we would continue throughout our life. So this morning and evening, that stays consistent. अब हमारे पास अलग अलग प्रैक्टिसेस आ रही है जो रोज हमको करनी होगी. So it is said that normally, like एक जैसे कार के 4 wheels होते हैं, तो लाइफ के भी 4 wheels होते हैं, which of course is relationships जो हम आज कर रहे हैं. Second will be health जो हम कल करेंगे. Then the third is money जो हम day after tomorrow will do. और फिर उसके बाद है करियर एंड सक्सेस, जो भी हमारा सोर्स ऑफ लिविंग है, जो भी हम करते हैं एज अ प्रोफेशनल, लाइक वी कुड बी अ होम मेकर, वी कुड बी अ स्टूडेंट, we could be a cook, we could be an entrepreneur, we could be whatever. So that's number 4. So these 4 areas अगर लाइफ के बहुत अच्छे चल रहे होते हैं तो बाकी सब अपने आप अच्छे चलने लग जाते हैं. So और उन चारों जो फोकस एरियाज हैं लाइफ के, all 4, उसमें से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप्स, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली सोशल एनिमल्स. There are no other social animals. और हम सब का इंटरडिपेंडेंसी बहुत पावरफुल होती है. Even in terms of creation, we are co-creating. Like even if we want, like suppose a career to boost our business to thrive, so it would be dependent on other human beings. Okay, so that is how we live. So everything, health, जब भी हेल्थ में ब्रेक डाउन होता है, it is because of emotional baggages that we are carrying because of someone. So हर चीज में there is an interdependency and a co-creation, and rather I should call it a social interdependency. Okay, that's why amongst all 4 सबसे important और सबसे पहला होता है relationships. अगर ये मैजिकल हो जाता है तो अपने आप लाइफ में बहुत कुछ सॉर्ट हो जाता है. Relationships give a lot of meaning and purpose to our life, whether we realize this or we don't realize this, right? So आज का वही हमको चैप्टर है that we will be having magical, and relationship का सिर्फ ये वाला चैप्टर नहीं है, अभी आगे जाके और भी चैप्टर्स आएंगे. एक और आएगा, heal my relationships. Heal हम उनसे करेंगे which is a broken relationship. So that's chapter number 15. So we are not doing that right now because initially अभी सब कुछ past and जो हमारे पास right now है हम उस पे work कर रहे हैं. So anything that we've had in our past, anything that we have right now, we are saying thank you to that, and we are beautifying it, to its fullest. So that is how beautiful this journey is going to be. So in this image that we see, there are 3 pictures. So there are 3 photographs. Okay, so these 3 photographs, हमको भी 3 वो लोग लेने हैं with whom we want to beautify, like add magic to the relationship with them. Okay, so these are very close people already in our life. They are not strangers. They are not broken relationships. They are there around us. Suppose you're living with your mother-in-law. Now, mother-in-law or your daughter-in-law, they are staying with you in the house. They are close relationships. They have everything to do with each other in the house, है ना? मतलब हमारा उनसे रोज आमना सामना होता है. रोज वो हमारे आजू बाजू होते हैं. But हमारा relationship में थोड़ा सा वैसा है that not that great. Okay, so ऐसे these kind of relationships पे आज हमको work करना है. So today we'll be working on these relationships where we are dealing with these people almost on a daily basis. Okay, like friends, very good friend, but कुछ time से बात नहीं हो रही है. We've had like whatever, we have not broken up, but yeah, it's not been that great. Okay, so we can do this with that friend of ours. You want to do it with a co-worker in office, you can do that. You want to do it with your son or a daughter, we can do this because they're close relationships, right? लेकिन बहुत ज़्यादा tips on and off होते जा रहे हैं, so we can do it with them.
So ये वैसी वाली practice है. So these are our close ones, these 3 people. जैसे ये 3 फोटो इसमें नजर आ रही हैं. And of course उसके नीचे एक जर्नल रखा हुआ है, gratitude journal, है ना? That means कि हमको इन तीनों के बारे में फोटो यूज करके we need to, and there's a pen on the side, okay, we need to write about them. How to do this practice? और Rhonda Byrne अपने हर चैप्टर में पहले ही समझाती है इनिशियली कि बैकड्रॉप क्या है, how does it work, and then she starts with some quote from someone, you know, who's a very wise, the person of wisdom. उनका quote होता है, उसके बाद then she gives the backdrop that how relationships को thrive होना बहुत important है, you know, and relationships सारे बहुत अच्छे होने चाहिए. All means all, है ना? In our heart we should not have any angst or any negative feeling towards anyone, because relationships is equal to bad health. Okay, it always works like that. कभी भी कोई डाइजेस्टिव इश्यूज होता है, कुछ होता है, तो हम हमेशा रिलेशनशिप्स को हील कराते हैं. उससे सब कुछ, इन एनएलपी टेक्निक, उससे सब कुछ ठीक हो जाता है. So hence this chapter, the biggest ship of the life is the relationship. और इसीलिए concentrated gratitudes के chapters में सबसे पहले relationship का chapter है. ठीक है? So let's study and let's engrave what we are reading. So संजू पढ़ेंगे, उनका नाम ज्योतिर्मय, मुझे पता नहीं था आपका formal name क्या है, because I knew only Sanju. So Sanju lives in Bangalore but belongs to North India only here. I think प्रिया की सिटी से है वो, है ना प्रिया? सोनीपत. So वहीं से है, but lives in Bangalore, has just started working there. Sonipat. He is a From Bengali living in Sonipat, born and brought up in Sonipat, now working in Bangalore. Studied there also. Studied there, did his graduation and now working there. Yeah. So yes, we are so happy that a youth is reading for us. हाँ जी बेटा, शुरू करो आप. Day 3, Magical Relationships. Imagine you were the only person on the earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because whatever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that gives your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start. Magically change your life. Science is now confirming that wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistics that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether it is whether in thoughts or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for one relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship.
And gratitude for your relationship doesn't change only your relationships, it also changes you, no matter what your temperaments is now. Gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationship will disappear, because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them, because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. We can only be we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of treasures. Thornton Wilder, writer and playwright. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer by the law of attraction. Whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to be magically increased, you have to be grateful for others just as they are. What if every person choose you said, I love you, just the way you are? How would you feel? Today, today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or both of you together. Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be what are their what are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you, and with a pen and notebook or your computer, choose the five things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of five things. Begin each sentence with the magic word thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. When you are finished your list for all three people,
continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magical words thank you and the person name. Thank you, Haley. If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now, you know how to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. Magic practice number 3, magical relationships. Repeat step 1, 2, 3 of magical practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photograph on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying magical word thank you and their name thank you, Haley. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Sanju. Thank you for reading so beautiful. It's always good जब बच्चे पढ़ते हैं. So it's Thank you, like ma'am. really nice. Thank you so much. So yeah, very powerful practice. अभी सुनने में बहुत लाइट सी लग रही होगी कि कैसे हो सकता है फोटो के साथ 5 पॉइंट्स लिखना. But this is how the rewiring begins. Okay, a grateful heart always has a continual feast. है ना? ये हमने पढ़ा था quote. We want continuous feast. Feast means life is a celebration. हम लिखते तो रहते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में किसी भी एक पर्सन के लिए एंग्स्ट है या हमको वो इरिटेट करता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि अभी भी दिल में कंप्लेन है. सो इट इज लाइफ इज अ सेलिब्रेशन लिखने से फिर कुछ नहीं होगा, बिकॉज अ ग्रेटफुल हार्ट हैज अ कॉन्टिन्यूअल फीस्ट. यू नो, सो अगर ग्रेटफुल हार्ट नहीं है हमारा, अगर हमारा ग्रेटिट्यूड नहीं है किसी पर्सन की तरफ, ठीक है, बहुत लोग होते हैं, सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, है ना. जैसे बुद्धिज्म में बोलते हैं ना दैट इन अ वाज देयर आर पीच, प्लम, चेरी ब्लॉसम्स एंड डैमसन्स. सबके फ्लेवर्स अलग अलग हैं. पीच का अलग है, प्लम का अलग है, चेरी अलग है, डैमसन अलग है, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं. बट and we can't expect the other person to start behaving exactly the way we want them to, right? उसकी अपनी यूनिकनेस है, उसकी क्वालिटीज हैं. सबकी क्वालिटीज को एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है. कहते हैं ना कि पोटैटोज को एक सैक में रख दो तो वो एक दूसरे से रगड़ रगड़ के अपने आप ही पॉलिश हो जाते हैं. सो उस तरह से पॉलिशिंग तो ऐसे ही होती है, ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी एम्ब्रेसिव एंड अकोमोडेटिव ऑफ अदर्स बिहेवियर जस्ट एज दे आर. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज अगर हम सबसे ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे वो चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, उसकी हैबिट चेंज हो जाए, मेरा बच्चा टाइम से सोने लग जाए, वो ऐसे करे, ये एफर्टिंग में हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और हमको दूसरों की सारी हैबिट्स इरिटेट करने लग जाएंगी. And irritation is way, way below the line feeling. It will never let us achieve our dreams. It will never give us a good health. It will never give us internal happiness.
and it will not let us move forward in life. So इसीलिए that चिड़चिड़ा behavior, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रही है, सब में limitations होती हैं, सब में shortcomings होती हैं. कौन है perfect? Everybody is a building under construction, and we stay that all our life, thankfully. That is what will give us the real growth and expansion, right? Because human beings are born for growth and expansion. Now, if we don't get that, how are we going to move forward in life? So everything starts from being very embracive towards every relationship without exception. This is the key, and there is an exclamation mark after this, है ना? So यही हम अब धीरे धीरे करेंगे, सारी relationships को best बना देंगे अपने दिल में, और हमें दूसरे person की जरूरत नहीं है इसमें, हमें खुद अपने पे work करना है. कोई भी प्रैक्टिस है, कोई भी चीज है, इरिटेशन तो हमको हो रही थी ना, हो सकता है उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा हो हमारे रहने नहीं रहने से, हमारे कुछ बोलने से. इसका मतलब है सारी प्रॉब्लम तो हमारे अंदर थी. सो नाउ वी विल वर्क ऑन आवरसेल्व्स. और उस पर्सन की फोटोग्राफ्स और वर्ड्स, ये दो चीजों की बहुत ज्यादा पावर होती है. ओके, फोटोग्राफ सामने रख के जब आप करोगे, फोटोग्राफ को देख के आप बोलोगे आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू जस्ट द वे यू आर, सो उसकी पावर ही अलग होती है. ठीक है, जब ऑडियो विजुअल जब साथ में काम करते हैं तो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से इमेजरी सीमेंट हो जाती है. इमेज की बहुत वैल्यू होती है, इसीलिए टुडेज प्रैक्टिस इज डन विद द पिक्चर्स. Okay, that picture could be a hard copy, it could be a digital copy, like on your phone gallery, wherever. So, but then उसको आपको अगर Facebook या Insta से आपने लिया है तो उसको आपको अपनी गैलरी में सेव करना पड़ेगा. ठीक है, so ये 3 लोग हैं, we have to choose today, and of course उसमें से अगर कोई एक relationship है जिसको हमको बहुत सुंदर बनाना है तो उसके साथ we can do this practice every day. Okay, and इसमें first initial paragraph में लिखा हुआ है that research studies have shown that for every one complaint about the other person, you know, you have to write 10 blessings. So this is what I keep telling you all again and again, that if you've made one complaint, I also do it a lot. I do it a lot. The moment I've complained, that time inadvertently I do it, I don't realize it. और उसके बाद में मतलब वो कंप्लेन की तरह नहीं बोलते हैं, जैसे कंप्लेन की तरह नहीं, ऐसे लगता है हमको कि नहीं नहीं ये कंप्लेन थोड़ी थी, मैंने कंप्लेन नहीं की है, दिस वाज नॉट अ कंप्लेन, इट डिडंट लुक लाइक दैट, इट डिडंट लुक लाइक कंप्लेन. No, but it wasn't complaint. It was venting out and that angst and that irritation coming or something from the backdrop. Okay, so उस एक complaint के लिए 10 blessings लिखनी पड़ेंगी हमको. And that is how the relationship is going to flourish. We want a life to flourish and thrive. We don't want to go back in life ever. Why are we just getting up in the morning and doing these books and leading our life in such a superior way now? Okay, but so we want all 100% relationships to be like really okay. I mean, like not tolerant, not that, but really nice. And that is how we need to move forward. So for that, it's very important that हम कम से कम शुरुआत कहीं से करें. तो शुरुआत कर रहे हैं हम उन 3 लोगों से जो हमारी लाइफ में हैं, जिनके साथ हमको रिलेशनशिप अमेजिंग करनी है, मैग्निफिसेंट एंड मैजिकल. ओके, सो ऐसे 3 लोगों की फोटोग्राफ वी हैव टू टेक. और कोई जरूरत नहीं होती है हमें अपने जिंदगी के बाहर किसी के लिए कंप्लेन करने की. हाँ, अगर आपको लगता है कि कभी कोई गलत कर रहा है लगातार, तो उससे आराम से बात करना और उसको समझाना, ये हमारा काम होता है. लेकिन वो केयर एंड कंसर्न से आना चाहिए. बहुत इजीली पता लग जाता है. सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू समवन कि मैं अपना वेंट आउट करके अपनी खुंदक निकाल रही हूँ, और am I really being very caring towards that person and then I'm addressing that person, then it will be a different thing altogether, isn't it? Like मैं बहुत ज़्यादा, like I have quite a few people in my life where I sit and say, and then I always start with, you know, that I really love these qualities that you have and you're so skilled, and, you know, how your brain thinks, no other brain can think like that. You're so intelligent, and I always observe that you do things out of the box. But I really think that this is one aspect you can try to change.
You can try to change this in your life, because this comes into notice again and again. Not that iski wajah se mujhe fark padta hai, but this is one trait you need to change. You know, could be a character default in that person, could be something else, or maybe, you know, like उसको unintentionally वो person वो चीज कर रहा है, उसको नहीं पता लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो इस तरह से समझाते हैं. तो अब अगर मैं इस तरह किसी को समझा रही हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस है ना. देन आई एम नॉट वेंटिंग आउट कि हमेशा ऐसे करते हो, ये है वो है, दिस इज हाउ यू बिहेव. So this is not the way we need to. So if you have to address your children, if you have to address, so I always talk to people in the family or outside when I have to explain, but I always start with their strengths. You know, that this is your strength, but I don't see that strength coming around in the act and behavior that you do, because you're so capable and capable of so much more in your life. Okay, so this is how, when you start addressing the person, then it is not that you are venting your irritation to that person. You know, so this is how it actually works. We can apply this, always see that strength in this person, and then us basis pe bolo that, you know, this strength has to come around in you, because you have so much. आप में इतना capability है, आप में इतना skill है, आप में goodness भरी हुई है, लेकिन वो दिखती क्यों नहीं है किसी को? क्यों गुस्सा करते हो? क्यों अपना हार्म कर रहे हो ऐसे कर करके? या क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो? या कुछ कैरेक्टर इश्यूज होता है, देन इट इज मे बी कि उस पर्सन के पेरेंट्स नहीं है, या मतलब कोई समझाने वाला नहीं है उसको, तो किसी ने उसको बताया ही नहीं है कि वो गलत करती जा रही है. So then we can take a step forward and explain to that person that, you know, this is how you're behaving or, you know, acting, and this is not so right. I think avoid doing all these things, because then you lose respect and everything in your life, and you will end up in a lot of misery. Okay, तो पहले उसकी strength बता के उसको address कर दो. ये अलग चीज होती है ना. उस conversation के बाद आपका उससे रिश्ता और अच्छा हो जाएगा. So I feel that this is where we go wrong, you know, whenever we are addressing the other person, हम पूरा वो कहते हैं ना, राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं उसके ऊपर. We don't have to do that. Okay, at the end of the day, it is our life. इसमें लिखा हुआ है ना, words are very powerful. Words are actually very powerful. क्यों हम लिखते हैं that I'm born to lead and shine, or, you know, I'm grateful that I live every single day of my life with so much, you know, with so much to the fullest, enriching. You know, all my relationships are enriching and so are thriving and flourishing. My money is constantly increasing. हम इसीलिए लिखते हैं ना, क्योंकि हमको पता है words की power होती है ना. तो वही वर्ड्स की पावर रिलेशनशिप में भी तो होती है. कोई भी वर्ड अगर हमने बोल दिया किसी को, दैट यू नो, और वो सच हो जाता है. तो इसलिए बहुत ध्यान से बोलना चाहिए. और जो चीज आपने किसी और को बोली है, वो आप झट से मैग्नेटाइज कर लेते हो अपनी जिंदगी में, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स. So the moment you've spoken something to somebody that you are stupid and you're this or whatever kind of words that we've used, you know, you are late and you never do this or whatever, you have immediately attracted it to your life, and you will become that kind of a person. Okay, and this is an automated process. इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है. इसीलिए थोड़ा सोच के समझ के, but again, you know, one thing I keep repeating is human mind is very, very trainable. Okay, human mind is very trainable. Train it. And training is going to be a lifelong process. You will never have it done. Okay, the moment you think that you've got it done, it expands and something else comes up. Then again it expands more. So training the human mind is what is very, very important, which we are doing. We are doing a good job at it. In any case, we're doing a good job at training at the mind. Right, we are trying to speak the things that we want. We know that हमारा conduct क्या होना चाहिए. हम सुबह सुबह उठते ही we wake up in gratitude. रात को सोने के पहले we are sleeping in gratitude. राइट, पूरे दिन भर में हम रोड को, फ्लाईओवर्स को, यू नो, जो रोड डिवाइडर्स हैं, जो हमारे लोग सफाई कर्मचारी होते हैं, और पीपल हु आर ट्रैश बिन कलेक्टर्स, और एनीवन, यू नो, लाइक आवर ड्राइवर्स और आवर हाउस हेल्प्स, हम सबको थैंक यू बोलते हैं. हम स्टेयरकेस को थैंक यू बोलते हैं. हम लिफ्ट को थैंक यू बोलते हैं. दिस इज हु वी हैव बिकम. सो वी हैव ऑलरेडी स्केल्ड 60% of our journey. Okay, it's only 40% left, which also we will be able to scale with ease, provided we have a grateful heart. Okay,
So only then we are going to have a continual feast. Feasting means a pleasure, celebration. Feast is a word which is in connotation to a celebration, right? So we want to celebrate our life to the fullest. We want to live every day as if we are celebrating our life, right? So ये है बस आज का chapter. और इसमें assignment कैसे करना है? Assignment करने का तरीका ये है that in a single shot we have to do for all 3 people. And today's assignment says you need 3 pictures of 3 people who are close to you. So we will keep that picture before us, digital copy or hard copy, whatever it is, that's immaterial. उसको हम सामने रखेंगे और अपने gratitude journal में हमको वो फोटो सामने रख के 5 points लिखने हैं with the language. Thank you, suppose thank you Manoj. Thank you Manoj for always supporting me whenever I have needed you. Thank you Manoj for taking me to have the best pastry in town. Thank you Manoj for picking up my call when I needed you the most the other day. Thank you, Manoj, for wishing me on my birthday every year. Thank you, Manoj, for, giving me some nice moments that we have really enjoyed. Suppose अगर आपने ये 5 point लिखे हैं, ठीक है? और अगर आपको बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, आपको मतलब थोड़ा लड़ाई का ऐसा चल रहा है कि आपको नहीं मन कर रहा कि आपको you don't want to remember what that person has done for you because you are a little bit more irritated. Okay, doesn't matter. Don't beat yourself. Okay, then you can pinpoint their qualities. Thank you, Manoj, that you have a very beautiful smile. Thank you, Manoj, that you're such a good son to your mother. Thank you, Manoj, for being such a punctual worker and for giving your 100% to your business or to your job. Thank you, Manoj, that every month you achieve your target at work. Thank you, Manoj, that you have some amazing driving skills. ठीक है? अब इसमें आपने ये नहीं लिखा कि उसने आपके लिए क्या किया है क्योंकि आपको नहीं दिल कर रहा है, बट आप उसकी स्किल्स लिख दो, उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका ड्रेसिंग सेंस. अगर वो बहुत अच्छा है, इफ ही स्मेल्स गुड, फ्रेग्रेंस अच्छा है, आप वो भी लिख सकते हो. थैंक यू मनोज फॉर ऑलवेज स्मेलिंग सो नाइस, फॉर ऑलवेज वेयरिंग अ नाइस परफ्यूम और वट एवर इट इज. ठीक है, इस तरह से. नाउ फर्स्ट पर्सन डन. Now you go to person number 2. Okay, so could be your mother-in-law. So there you write, thank you mama, whatever you call her. Okay, अगर आप अम्मा, अम्मी, मम्मी जो भी आप बोलते हो, आपको वो वर्ड यूज करना है, उनका नाम नहीं लेना है. ठीक है. Thank you mummy for being such an amazing cook. Thank you mummy for giving your son to me who's my partner for today. Who's my partner today. Thank you, Mummy, that you make such amazing pickles. Thank you, Mummy, for your amazing dressing sense and you wear such beautiful suits and saris. Thank you, Mummy, for looking after yourself so well and being so diligent with going for a walk every day. Okay, अब ये 5 चीजें लिखी. Now you go to person number 3. उसकी फोटो सामने रखो. ठीक है, और बहुत अच्छे से मतलब अपना हार्ट एक्सपैंड करके, है ना, एंग्स नहीं होना चाहिए. अगर आपको थोड़ा इरिटेशन लग रहा है उन लोगों का करने में, तो उसके पहले थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लेना. सो डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, द हार्ट एंड माइंड कोहेरेंस हो जाती है. मतलब it's settled, your heart is settled, it is not palpitating anymore, it is not giving you negative thoughts, or it's not making you remember the past which has not been that great with that person. है ना, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो जब आपका अपने आप सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में चले जाओ, नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है. सो जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, बैक स्ट्रेट रख के, शोल्डर स्ट्रेट रख के, सो द मोमेंट यू आर इनहेलिंग डीप एब्डोमेन से, ठीक है, पेट से सांस लेना. अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं, पेट से सांस लेते हैं और पेट से सांस इस तरह से छोड़ते हैं और दिमाग को डीक्लटर करके सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दो. सी द एयर गोइंग इनसाइड टुवर्ड्स योर एब्डोमेन एंड सी द एयर बाहर आ रही है फ्रॉम योर एब्डोमेन एंड कमिंग आउट फ्रॉम नॉस्ट्रल्स. अगर आपने 5 से 6 डीप ब्रीदिंग भी कर ली तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम में जो वायरिंग और फायरिंग जो हो रही है वो पूरी तरह से बदल जाती है और हम
सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो रीजन लॉजिक हमको कर रहा है, जिसकी वजह से आपको नहीं दिल कर रहा था उस पर्सन के बारे में अच्छाई लिखना, और फाइंडिंग गुड थिंग्स अबाउट अ पर्सन who's really troubled you, and again you are going back to remembering that moment which wasn't that great. Okay, अगर आप बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो that will settle down. So you do your deep breathing for a while, maybe 2, 3, 4, 5, 6, till the time आप बहुत synced in नहीं feel करते हो, उसके बाद ये वाली कर लो प्रैक्टिस. ठीक है, कोई अपने आप को बीट करने की भी कोई जरूरत नहीं है. लुकिंग डाउन ऑन योरसेल्फ एंड सेइंग आई डोंट फील लाइक, यू डोंट नीड टू डू दैट. ठीक है, यू आर वेरी वेरी प्रेशियस टू योरसेल्फ. अपना सबसे बड़ा साथी आप ही हो. सो इसलिए थोड़ा इजी अपने आप को लेना लाइफ को, और इस तरह से अब उसके बाद लिखो. ठीक है, जब बहुत अच्छे से डीप ब्रीदिंग किया तो हार्ट माइंड कोहेरेंस हो जाता है. दैट मीन्स दे आर इन सिंक विथ ईच अदर. और फिर उसके बाद इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड मोर एंड मोर गुड थिंग्स, है ना. जब तक हार्ट माइंड सिंक नहीं होगा तब तक उसकी अच्छी चीजें देखे नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी भी कंप्लेन से सैचुरेटेड हो सकता है हो. सो इसलिए अब ये तीनों का कर लिया हमने. ये practice we will have to do as early as possible in the morning. So I'll also do it just after the session right now. Morning में क्यों करना है? Because इन तीनों लोगों का फोटो हमने अभी तो लिख लिया 5 पॉइंट्स. अब तीनों लोगों का फोटो हमको दिन में 3 बार और. So these picture, which is there as a digital copy or a hard copy, we have to carry this with us today, or we have to keep it somewhere which is very accessible, जहाँ पे हमको आराम से मिल जाए, या हमको अपने साथ लेके जाना है. अगर आप वर्किंग हो, घर के बाहर आपका काम है, तो आपको अपने साथ लेके जाना है ये वाली तीनों की फोटो. फोन तो लेके ही जाएंगे तो गैलरी में तो होगी. And once during the day, once in the evening, and once in the night. That is 3 more times you have to take this picture out, and you have to look at them with love in your heart and say, thank you, Manoj. Thank you, Mummy. That way. Thank you, Rahul. So this is how you have to say. ठीक है, और थोड़ा प्यार के साथ में, thank you Manoj, thank you mummy for everything. This is what you have to tell them 3 times during the day. Other than doing this one practice. सुबह तो करना ही है, सुबह तो 5 पॉइंट लिखना है. पूरे दिन 5 पॉइंट नहीं लिखना है. पूरे दिन बस फोटो निकालना है, प्यार से उनको देखना है, with a smile in your face, on your face, and then say thank you so and so. ठीक है, this is the practice for today. और रोंडा पर ने ये भी बोला है that आप अगर किसी के साथ आपको मैजिकल करनी है रिलेशनशिप की, बिल्कुल ही मतलब मजा आ जाए और वो खूब फ्लरिश करे, तो ये प्रैक्टिस किसी भी एक पर्सन के साथ आप रोज कर सकते हो. एंड 5 पॉइंट्स लिखना इज नॉट अ बिग डील. ओके, 5 पॉइंट्स 2 सेकेंड में हो जाते हैं. लोग 100, 200, 300, 400, 500 लिख लेते हैं. सो 5 लिखना इज नॉट अ बिग डील, है ना. सो 5 तो हम रोज लिख सकते हैं अगर हमें किसी के साथ मैजिकल रिलेशनशिप करनी है तो, बिकॉज दैट पर्सन रियली मैटर्स टू अस. एंड कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स रिजल्ट्स. Okay, so when you do it consistently, you will see that आपका हार्ट ही बदल गया है उस पर्सन की तरफ धीरे धीरे. अब सबकॉन्शियस में वो सीमेंट हो गया है ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन. अब आप देखोगे उस पर्सन का बिहेवियर चेंज होता जाएगा. वो आपकी तरफ कंपैशनेट हो जाएगा, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे. आपको ये पता लग जाएगा कि why that person was behaving like this so irrationally. You felt irrational that time. Okay, but now you will be able to understand that, oh, this was the reason why this person was behaving so irrationally. इसकी लाइफ में इतनी सफरिंग है, इसके मतलब, और ये वेंट नहीं कर पाता है या कर पाती है, और बहुत ज्यादा स्लॉग हो रहा है इसकी लाइफ में. सो मे बी आई कैन बी ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट. So that is how this beautiful practice is. It is almost like you can say telepathy, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था. ठीक है, टेलीपैथी के बारे में मैंने आपको समझाया था ना एक बारी, कि टेलीपैथी इज व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग, लाइक आप, इट्स लाइक अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस दैट आप जब बैठे हुए होते हो, आप अपने इमेजिनेशन में सोचो कि वो पर्सन आपके सामने है और आप उसको कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर्स होते हैं यूनिवर्सल फोर्सेस के, और उस पर्सन को पता लग जाता है. सो ह्यूमन ब्रेन से वन का कनेक्शन दूसरे के साथ बहुत पावरफुल होता है. तभी तो हमारी रिलेशनशिप खराब होती है,
क्योंकि हमारे मन में उस पर्सन के लिए, आप मिले भी नहीं हो सपोज 1 महीने से उस पर्सन के साथ में, ठीक है, बट आपने इतना ग्रज होल्ड रखा है मतलब कुछ ऐसा, नॉट ग्रज, ओके, मे बी नॉट दैट ग्रेट, लाइक इरिटेशन वाली फीलिंग है, या कुछ न कुछ एंगर है, या कुछ ऐसा है, तो वो उस पर्सन के ब्रेन में ट्रांसमिट हो रहा है सारा, क्योंकि वो फोकस एंड डायरेक्शन के साथ जाता है ना, एनर्जीज ऐसे ही जाती हैं। तो वो जो एनर्जी आपके मन में है कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, माई मान लॉ इज नॉट गुड, और ये, और मैं बात नहीं मानती, शी इज वेरी डोमिनेटिंग, सपोज ओके दैट मैन। सो अब वो सब कुछ उनके ब्रेन में पेनिट्रेट हो रहा है, उनके माइंड में भी जा रहा है, तो आपका रिश्ता अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है। अब आपको उनको बोलने की जरूरत नहीं है, कोई फोटो लेके बैठे ना मम इन लॉ की, कोई उनको थोड़ी लेके बैठे हुए सामने, वो नहीं बैठी हुई है ना सामने, फोटो लेके बैठे हैं। अब फोटो के साथ हम बहुत ज्यादा दिल में प्यार भर के ग्रैटिट्यूड शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि उनकी ये क्वालिटी है, कितनी सुंदर साड़ी की कलेक्शन है, बहुत जो भी है, मैं आपके बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, सपोज यू कैन राइट दैट। सो नाउ ऑल दैट ग्रैटिट्यूड विल गेट ट्रांसपायर्ड टू हर, उनके उनके माइंड में चला जाएगा। इसी को टेलीपैथी बोलते हैं। टेलीपैथी एक बहुत पावरफुल साइंस होती है। तो कोई भी पर्सन कितनी भी दूर बैठा हुआ है, आप अगर इंडिया में हो और कोई अमेरिका में है, आप टेलीपैथी के थ्रू उसको प्यार भिजवा सकते हो, ठीक है। नहीं बोलना है, लेकिन आप यू कैन सेंड लव टू दैट पर्सन, यू कैन सेंड ईज टू दैट पर्सन, यू कैन सेंड क्लैरिटी टू दैट पर्सन, you can send a mental freedom to that person, you can send healing to that person. This is how powerful these techniques are. Okay, so the grateful heart, whatever that energy that you will be radiating, आप अपनी जिंदगी से, आप अपने दिल से जो एनर्जी रेडिएट करना चाहते हो उस पर्सन को, वो वहां तक पहुंचेगी, और पहुंचा दो उसको ईज। कभी कभी विजडम पहुंचानी पड़ती है, जब हमें पता लगता है कि वो पर्सन बहुत इरेशनली बिहेव कर रहा है, कर रही है, जो भी है, एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट, और वो कुछ भी, ठीक है, हीलिंग एंड विजडम की जरूरत है उनको उस टाइम, क्योंकि उनके बैगेजेस ही अपने दूसरे हैं, है ना, सबके अलग अलग बैगेजेस होते हैं कमिंग फ्रॉम द पास्ट। सो यू कैन सेंड दैट हीलिंग एंड विजडम एंड क्लैरिटी, सो दैट दैट पर्सन रियलाइजेस, उसको पता तो लगे, है ना। सो इसलिए यू विल सी अ डिफरेंस इन द एक्शन। लेकिन जब तक अगर आप ये सोचते रहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वो भी गलत था, ऐसा बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसका ऐसे है, तब तक आप जो सोच रहे हो उसके बारे में, आप वो वाली एनर्जी भेज रहे हो कि उसको गुस्सा बहुत आता है, बात नहीं मानता, ऐसे करता है, वैसे करता है, उसमें अक्ल नहीं है, उसमें ये नहीं है। सो ऑल दैट इज गोइंग टू द अदर पर्सन देन, सो you will see more of that happening, because that's what you're radiating, and it's a very focused, pinned down energy which is going in the head of that person whenever you're thinking about a particular person, could be anybody. Okay, so this is the reason, always say that whenever your loved ones are not feeling well or they have a health breakdown, don't even talk about it. Okay, send them healing. This is nothing to do with today's chapter, but just telling you out of the way, that send them that they are getting better, everything is so perfect, and every cell of the body is dancing with joy, they are super happy, life's just getting better and better for that person. और focus gratitude करो उस person की तरफ, फोटो सामने रखनी है, फोटो ले लो, जो करना है करो वैसे, ठीक है, and it will radiate. This is science, it's a law, and this is how it works, whether we believe it or we don't believe it. Yeah, so try and do that more. Don't get worried. Okay, don't get worried about it. You get worried about it, telepathy works. वरिंग थॉट का मतलब होता है उनकी तबीयत इतनी खराब हो रही है, वो कितना सफर कर रहे हैं, बस वो सफरिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी उस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आप वो वाले थॉट्स रेडिएट कर रहे हो, है ना। सो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं, ये हमें कंट्रोल करना है, ये हमारे हाथ में है, और जो आप सोच रहे हो वो वहां तक जाएगी। तो ये रिलेशनशिप्स वाला भी इसी तरीके का चैप्टर है। आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दो,
कभी कभी डेलिबरेटली करना पड़ेगा। रोंडा बर्न ने पहले ही डे 0 में ही बता दिया है कि देखो डेलिबरेटली करना पड़ेगा, दिल से नहीं निकलेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे दिल से नहीं निकलेगा थैंक यू, ठीक है, जहां पे सफरिंग इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में, वहां दिल से नहीं निकलेगा, लेकिन deliberately karo. And we are not needing the other person to do these practices, right? We're doing it ourselves. We're sitting in our bedroom, in our living room, maybe in the car, okay, and we're doing it ourselves. So we don't need the other person. The other person is not even required in any of the practices that we are doing. Except for magic dust, everyone, where it says that, you know, अगर आप किसी को आंख में आंख डाल के बोल सकते हो कि thank you for all your effort or something, or thank you, अपने cook को बोलना है आपको thank you, you made such nice poha or whatever, you know, that's a different story. But in all these practices, you don't need the other person. You can just convey your thing to the other person and have a beautiful relationship. And beautiful relationships are going to give you such amazing life, I'm telling you, because, you know, jo bhi suffering hoti hai na, that stems from relationship issues. All the diseases stem from relationship issues. है ना? You can heal your body में हमने लुइस है की मैंने आपको बताया था, there's a book called Heal Your Body by लुइस है, तो उसमें हर इमोशन के साथ में डिजीज लिंक्ड है कि अच्छा एंगर का इमोशन है, ये बीमारियां होंगी आपको, ये वाला इमोशन है आपको किडनी की प्रॉब्लम्स होंगी, ये वाला इमोशन है तो आपको डायबिटीज होगा, ये वाला इमोशन है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, ये वाला इमोशन है तो आपको कैंसर होगा, है ना? उसमें पूरा लिखा हुआ है, एक्सेल चार्ट बना हुआ है, एक्सेल शीट बनी हुई है बीच के पेजेस में कि ये वाला इमोशन है तो ये वाली बीमारी है। हम क्यों नेगेटिव कैरी कर रहे हैं? हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपना चिल्ड आउट रहेंगे। लेट पीपल इधर उधर, लेट देम। It is all about you, that one, the center of the universe is you, है ना? जिसको हम गोविंद बोलते हैं, गोविंद तो आप ही हो। Go is ब्रह्मांड, बिंद is बिंदु. So the biggest God, the biggest, all the universal power and the forces lie within us, and you're the center of the universe. Okay, so why not create from that point? When you have all the powers of the universe has created trees, birds, well, everything you can think of, the rising of the sun, setting of the sun, moon, planets, everything. Okay, oceans, all the seas and everything, human beings. That is the power of creation that we also have in our life, but we are not aware right now. But we have to realize that I have the power to change anything in my life, no matter how deep rooted it might be. Okay, so that is the power we have. Slowly we will. So gratitude की energy, energetic quantum level पे बहुत powerful चीज होती है. Gratitude and then love. Come to that level where you start loving everyone irrespective of who they are, right? Because gratitude के भी ऊपर love होता है. Love is enlightenment. Love is what we call God. पढ़ा होगा ना, जो ऑटोज के पीछे लिखा होता है लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, ऑल इन वन एंड वन इन ऑल, है ना? इसका मतलब यही होता है. या so this is the practice. So practices are morning, count my blessings, write the date, write today's day, because this date and this day will never come back in your life. Honor it. Okay, and then you write the 10 blessings that you have in your life right now, which is the biggest gift that the universe has given to us, and reread them and 3 times say thank you, thank you, thank you, so that we can recreate. 3 times thank you is recreating. And then ये वाली practice सुबह कर लेना, 10 बजे के पहले कर लेना. Don't be in a hurry. ऐसा नहीं कि सारा काम छोड़ के खाना बनाना है, वो नहीं कर रहे. By 10 o'clock do it, so that you have the time 3 times more during the day to look at those pictures and say thank you. Look into their eyes, और प्यार, थोड़ा सा प्यार लाके, है ना? प्यार लाके थैंक यू भी बोल दो, आई लव यू भी बोल दो, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हम, है ना? सो ये, एंड उसके बाद दिन में 3 बार और थैंक यू, आई लव यू बोलना है. और फिर रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस. होल्ड द रॉक इन योर हैंड, मुट्ठी बंद करो और अच्छी अच्छी चीजें सोचो सारी, उसमें से बेस्ट चीज निकालो और उसको थैंक यू बोल के सो जाओ. तो आपने पूरी रिवायरिंग कर दी ऑलरेडी, एंड यू विल सी इन लेस देन अ मंथ योर लाइफ विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग at level that you have never imagined before. Okay, so this is the practice, and now we go to the other book, which is The Hero.
So we are the hero of our own life is what we are studying. कल भी हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब होता रहेगा, बट रियली डजंट मैटर. ठीक है, अपनी ड्रीम लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत करो, वो सब होता रहेगा. बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत एग्जाम होते हैं. जब भी जिंदगी में लेवल अप होना होता है ना, तो एग्जाम होता है. किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है ना, तो एग्जाम होता है. किसी 7 ग्रेड से 8 ग्रेड में जाओगे तब एग्जाम होगा. ठीक है, सो एग्जाम होते रहेंगे, बस पास हो जाना, थैंक यू बोल देना, और ये मत भूलना कि लाइफ का रियल पर्पस क्या है. तो हम अभी लॉर्ड हैमिल्टन का ये वाला पढ़ रहे हैं. तो लॉर्ड हैमिल्टन ने यही समझाया है कि सिर्फ मटेरियल चीजों के पीछे मत. लाइफ का पर्पस इज नॉट जस्ट टू, यस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू एंजॉय द मटेरियल थिंग्स and you buy the best of brands and all that. That's good. You should go and give yourself that level that you stay in a 7-star hotel, or you can spend on yourself, है ना. अपने लाइफ को उस लेवल पर तक लेके आओ कि आपके पास बहुत संपन्नता, प्रोस्पेरिटी आ रही है, और आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो, और आपको बहुत पैसे के बारे में, बट वो पैसा लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता, है ना. तो इसमें यही लॉर्ड हैमिल्टन ने समझाया है कि पैसा इज पार्ट ऑफ the success, but that cannot define our success. Success is like you're leaving behind a legacy that we are, that inspires others, because human beings बहुत closely connected होते हैं एक दूसरे के साथ. Yes, Bitti ji, waiting for you to start reading. Are you there on the call? Are you there on the call? Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. please. Lord Hamilton, what is money for you? If it's gold, then it will be ruler of you. It will dictate your movements and it will control you. Material things are wonderful, and experiencing them is one of the great pleasures of living on earth. But through the conditioning of society, we can be misled into thinking that the accruement of material things is the purpose of our life. If material things were the purpose of our life, they would provide true happiness, fulfillment, and satisfaction, and we never need to buy another thing. The happiness we feel when we get those things wouldn't be fleeting but would be everlasting. If accruing material things were our purpose in life, we would be able to take them with us when we leave. You would walk outside to get the paper in the morning and see that old man Joe house across the street disappeared because he took it with him. We can't take material things with us because they are not who we are, while they are part of the joy of living on earth. They are not the purpose of our life. Yeah, so it just says that, सिर्फ पैसे के बारे में सोचना और बाकी चीजें secondary कर देना, that's not a right thing to do. That cannot be the purpose in life. Nobody dies with the wealth and diamonds and riches. Money is to be circulated in any case. Money does not like being stagnated. Okay, so money wants to be circulated. So, of course, it's very important for everyone to enjoy the luxuries and the prosperity around, and to buy nice diamonds, in case all of us have got different ideologies about wealth and success, isn't it? Some people would like to travel more जब उनके पास पैसा आता है. कई लोगों को ये अच्छा लगता है कि वो बहुत मतलब प्रॉपर्टीज बनाए. ठीक है, उनको प्रॉपर्टीज से क्रेज होता है, लाइक लिटरली एक के बाद एक अच्छे अच्छे घर, चाहे वो उनको रेंट पे डाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट वो बनाना. तो सबका अलग अलग इंजॉयमेंट का क्राइटेरिया. कई लोगों को बहुत अच्छे ब्रांड्स पहनने का शौक होता है. सो सबका अपना है, एंड एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड फॉर हु दे आर, है ना. सबकी अपनी यूनिकनेस है, स्ट्रेंथ्स हैं, इंडिविजुअलिटी है, और वो बहुत अच्छी बात होती है. लेकिन जिंदगी में इन्होंने बोला है कि जैसे जो है, सपोज आज है कल नहीं होगा, तो वो अपना घर थोड़ी साथ लेके चला जाएगा कि आज वो घर है और वो आज वो नहीं है, क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाता है.
इसीलिए अपना पर्पस, add meaning and purpose and value to your life. We are already adding that. I think all of us are, like हमारी लाइफ का बहुत मीनिंग और पर्पस अब हो गया है. पहले जिस तरह की जिंदगी जीते थे, like वही सुबह उठना, like means to an end करना, बस सुबह उठ के कैसे रात होगी. We were living in survival all our lives, right? So डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमेशा इन दोनों कैटेगरीज के बारे में बोलते हैं. एक दैट don't live in the survival mode, live in the creation mode. अपनी जिंदगी को create करो और करो और करो in terms of everything, add meaning and purpose and value. Everything has to serve good. Like in Buddhism, they say that whenever you lead your life, whatever vocation जो आपका है, it has to have beauty, benefit and good. So beauty का मतलब है that you should love what you're doing, है ना? बेनिफिट का मतलब है उससे बहुत फाइनेंशियल गेन्स भी आपको हो रहे हैं. तो मनी एक एस्पेक्ट है उसमें, उन तीनों में से. सो फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं और वो आपको बहुत पैसा दे रहा है, और बहुत पैसा देना भी चाहिए, उस लेवल तक लेके आना है. सो बेनिफिट एंड गुड मीन्स इट हैज टू सर्व द अदर्स इन इट्स ओन वे. ठीक है, अपने तरीके से वो किसी और को सर्व कर रहा है, किसी और को खुशी दे रहा है. किसी, जैसे अगर आप बैंकर भी हो और आप टेलर हो, टेलर की जॉब पे हो बैंक में, तो वो पर्सन भी तो कितने लोगों का काम आसान कर रहा है. कोई पैसे डिपॉजिट करने आ रहा है, कोई पैसे लेने आ रहा है, मतलब विड्रॉ करने के लिए आ रहा है, कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है. तो इस तरह से लाइक टेलर की जॉब भी कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो सर्व कर रहा है ना दूसरों को. तो इसीलिए जब भी आप कुछ करो, इट इज नॉट टू बी लिविंग इन आइसोलेशन, है ना? क्या फायदा आप ऐसा घर बनाओ. टोनी रॉबिन्स ने एक बार बोला था कि अगर आपने बहुत बड़ा बाय द ओशन एक बहुत बड़ा सा लग्जरी मैंशन बना लिया, ठीक है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें ये है, जिसमें वो है, जिसमें वो है, लेकिन आपके बहुत अच्छा डिस्क बनाया, म्यूजिक सिस्टम लगाया उसमें कि बहुत अच्छा सा घर के अंदर ही सब है, बहुत सुंदर बार बनाई है जिसमें चॉइसेस्ट ऑफ द लिकर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्लासिक विंटेज बॉटल्स एंड ऑल ऑफ दैट, ब्यूटीफुल ग्लासवेयर है, पूरा कटलरी है वहां पे, सब कुछ है घर में, बहुत अच्छे कुक्स एंड बहुत अच्छे वैसे हैं स्टाफ. लेकिन क्या फायदा अगर उस घर में एक जना रहता और कोई आता ही ना हो. उस पर्सन के रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि कोई भी नहीं आता है उसके घर में. कोई फायदा नहीं है ना ऐसे घर का. Because everything is for the joy. If I'm buying a huge mansion somewhere, I would want वहां की खूब फुटफॉल हो, खूब लोग आए जाएं, मजे करें, खुशियां हो. इस तरह की जिंदगी होनी चाहिए. तो सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए. पर्पस ऑफ लाइफ ये नहीं हो सकता ना सिर्फ मनी. यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो है हमको ऑलरेडी मालूम है वैसे. हाँ जी. लेन बीचली. आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है आज बिट्टी जी. कैन यू कम क्लोजर टू योर डिवाइस, और आई डोंट नो इफ यू चेंज्ड योर एयरपॉड्स और समथिंग. Yes. It was tough, it was challenging, and I sacrificed a lot. But I made those sacrifices out of choice because following my dream of becoming a world champion was way more important to me than earning money. We all need food, shelter, and clothing, but the pursuit of material things for their sake alone robs us of the freedom to live a truly fulfilling life. Don't let the tail wag the dog by making security and pursuit of material things the purpose of your life instead of following your dreams. The irony is that when you do choose to follow your dreams over security, you will have it all material riches and a rich, fulfilling life. In addition, you receive something that money can never buy. You will have the greatest feeling of accomplishment, fulfillment, and satisfaction. Of course, you will always want to do more and continue to build on your dreams. But when you experience that feeling of absolute fulfillment from taking the hero's journey, you will be in no doubt that it was what you were born to do. And all that you gain within from fulfilling your purpose is what you do take with you when you leave. Don't get the
to the end of your life and regret all the things you didn't do. Your life is precious. If you sell yourself out, you won't find the happiness you desperately seek, because true happiness comes from fulfilling your dreams. Imagine what it would be like to get to the end of your life with no regrets. Imagine reflecting back on everything you did and you are filled with the greatest feeling of satisfaction. Yeah. So this is what Laird Hamilton is trying to say, that initially मेरी जिंदगी में बहुत impediments थे, बहुत सारे obstacles थे, नई चीजें अपने हिसाब से चल रही थी, और लेकिन फिर भी मैंने पैसे को होल्ड ऑन टू नहीं किया कि मतलब बस पैसा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसिक्योरिटी के कारण। अगर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा है खुल के तो वो इनसिक्योरिटी तो होती है ना, दैट कल के लिए वरी है, तभी तो आज पैसा नहीं खर्च कर पा रहे। पैसा है बैंक में, ठीक है, लेकिन नहीं खर्चा किया जा रहा है, दैट मीन्स आप इनसिक्योर हो टुमारो के लिए, दैट मीन्स लैक मेंटालिटी है, यू नो, और डाउटिंग योर ओन क्रिएशन प्रोसेस। सो इसलिए खुल के खर्चा करो। पैसे जैसे ही जाएगा, अगर वो ब्लेस होके जाएगा बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट विल कम बैक टू योर लाइफ मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स। दैट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। इसलिए खुल के पैसे खर्च करो। बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचो मत। बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचोगे तो पैसा रास्ता ढूंढ लेता है जाने का, ठीक है, नुकसान के थ्रू, लॉस के थ्रू, थेफ्ट के थ्रू, और वट एवर इट इज, ठीक है। तो इसलिए उसको अच्छी चीजों में खर्च कर दो जिससे आपको बहुत खुशी मिल रही है ना। नहीं तो बार बार एसी खराब हो रहा है, कोई बोल रहा है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, अब आप इसको कर लो। हम नहीं चाहते ना कि इस तरह से भी पैसा जाए, ऐसे क्यों जाए, इसीलिए पहले ही कर लो। तो इसमें लैर्ड हैमिल्टन बोल रहे हैं कि इनसिक्योरिटी के कारण आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो, या आपको लग रहा है कि पता नहीं इसमें पैसा तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा मत करो। पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि हर एक दिन अपना, यू आर वेरी प्रेशियस टू योरसेल्फ, इन्होंने भी ये लिखा है ना, that you are very very precious, your life is precious. If you sell yourself out, you won't find the happiness you desperately seek, because true happiness comes from fulfilling your dreams. Okay, so whatever it is your dream, chase that in a good way. अब कई बार ऐसे होता है कि पैसे के चक्कर में लोग थोड़ा उंगली टेढ़ी कर लेते हैं, गलत चीज करना, बहुत रेफरेंसेस मिनिस्टर्स के थ्रू, इनके थ्रू ऐसे अपने काम करवाना, लोगों को यूज करना कि कैन यू हेल्प मी विद दैट, all those things means you are giving your power to someone else, so you're powerless. A powerless person cannot achieve anything of power. Okay, इसलिए believe and trust in that process of creation. You don't need to. Okay, अगर आपको सपोज कोई आर्किटेक्ट है और उसको बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने का शौक है, लाइक लाइव बिल्डिंग्स, तो वो किसी का सोर्स ले लेके जबरदस्ती उनको, वो पीपल प्लीजिंग जो होता है ना, पीपल प्लीजर्स यही होते हैं जिनको अपनी पावर नहीं पता होती है। वो पीपल प्लीजिंग के थ्रू, सो दैट पर्सन टेक्स यू टू द बेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स एंड शोज यू द बेस्ट क्रिएशन ऑफ बिल्डिंग्स अराउंड, दैट इज गिविंग योर पावर टू समथिंग एल्स। दैट मीन्स यू आर अ वीक पर्सन, or a coward. You don't have that courage to create. So don't get into all those things also. Life बहुत sanctity के साथ, integrity के साथ और honesty के साथ जियो, ठीक है, बिकॉज वो सब जिंदगी में वापस आता है। सुना हमने है ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ऐसे ऐसे गांधी जी के 3 बंदर, ठीक है, बचपन से आई थिंक हम सब ने ये वाली कहानियां देखी है। तो अब हम इनको थोड़ा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं अपने तरीके से, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। मुंह से तो बुरी चीजें निकल ही जाती हैं कई बार, बट डजंट मैटर, ठीक है। वी आर वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन, सो हम हमेशा वही रहेंगे और अच्छी बातें होते रहेंगे, बट अपनी पावर को रियलाइज करो एंड सीक दैट रियल पर्पस इन योर लाइफ। मतलब चारों एरियाज आपके बहुत अच्छे होने चाहिए ना, जो 4 हमने गाड़ी के व्हील्स देखे हैं। So of course we have to have a lot of money. There's no doubt about it that money and luxuries, does make a difference. So definitely, but the relationships have to be very good as well.
ऐसा थोड़ी है कि पैसा ही पैसा आ गया और कोई रिश्ते नहीं है, कोई मीनिंगफुल फ्रेंड्स नहीं है, नो वन टू शेयर योर जॉयज विथ, नो वन टू लाफ, नो वन टू like be there for you, no one to this. Treasure the relationships that we all have, it's very very important, है ना। और फैमिली तो चलो एक दूसरे से बाउंड होती है, जो दोस्त जिंदगी में बनते हैं कितनी सेल्फलेस रिलेशनशिप होती है ना उनकी, उनको कुछ नहीं, उनकी अपनी फैमिली है, उनके अपने माँ बाप हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी दे आर देयर फॉर यू, व्हेन यू नीड देम। इजंट इट सो ब्यूटीफुल? सो इतनी सेल्फलेस रिलेशनशिप्स होती हैं, उनको ट्रेजर करना, उनमें और मीनिंग डालना, जॉयज लेना देना, वो भी बहुत जरूरी है। फिर हेल्थ, अब ऐसे नहीं कि पैसे कमा रहे हैं पागल ही हो गए, बिल्कुल पूरी हेल्थ बिल्कुल ही गड़बड़ हो रही है, बीमारियां होती जा रही है, रातों को नींद नहीं आती, पैसा बहुत आ रहा है बट रात को नींद नहीं आ रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो गए हैं, ये भी हो गया है, शुगर भी हो गई है, आजकल तो डायबिटीज का नाम ही स्ट्रेस डायबिटीज हो गया है, बिकॉज वो स्ट्रेस की वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से ब्लड शुगर बढ़ती है, ठीक है, तो उसका नाम ही स्ट्रेस डायबिटीज हो गया। लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रेस था इसलिए उसको ये हो गया है, बहुत स्ट्रेस था इसलिए ऐसा हो गया। क्या फायदा है ऐसे पैसे का? कोई फायदा है ऐसे पैसे का? हेल्थ सबसे बड़ा ट्रेजर होता है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ को आप वेल्थ नहीं समझ रहे हो और सिर्फ वेल्थ को वेल्थ समझ रहे हो, व्हाट इज दैट वेल्थ? इट्स नॉट द रियल रिचेस, एक्चुअली कम्स फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर बॉडी दैट यू हैव, विच इज कहते हैं ना, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। एक मंदिर की तरह अपनी बॉडी को वर्शिप करो। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा कितना अच्छा बिहेवियर होता है, हम कभी अब्यूजिव लैंग्वेज मंदिर में यूज नहीं करते, हम अच्छे से बहुत साफ सुथरे नहा धो के जाते हैं, ठीक है, हम बहुत प्यार से रेवरेंस के साथ जल चढ़ाते हैं, या जो भी दूध लेके गए तो दूध चढ़ाते हैं, फ्लावर्स देते हैं टेम्पल में, है ना, और अपने जूते चप्पल बाहर उतार के जाते हैं, और शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा क्लटर्ड दिमाग नहीं होता, हाथ जोड़ते हैं, भगवान से कनेक्टेड है, अपने आप से कनेक्टेड है। ऐसी जिंदगी, तो अपने शरीर को टेम्पल की तरह भी ट्रीट करो। ऑफ कोर्स वो सब करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन द रियल लाइक वर्शिपिंग हैज टू बी व्हेन यू वर्शिप योर ओन हेल्थ। ओके, तो अब से पैसा और हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दैट्स ऑल्सो नॉट वेरी गुड, है ना। सो इस तरह से अगर ऐसी जॉब है किसी की जो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज करा रही है हेल्थ के साथ में, तो क्रिएट अनदर जॉब ना। हमने आपको सिखा दिया है ना अभी क्रिएशन का प्रोसेस, तो क्रिएट अनदर जॉब, अपनी ड्रीम लिस्ट में डालो, और बहुत बहुत ही माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेलिंग के साथ में, that what is it, that kind of a job that you would want, what kind of colleagues, what distance it has to be from your home, what kind of an atmosphere do you want, what is it that you love to do, what is it like, like what kind of colleagues do you want. So what kind of a salary do you want? What date do you want your salary, like in the first week of every month, or you want it on the 31st of the same month, or whatever. So all that you want, you create the process. यही तो कर रहे हैं मैजिक बुक में. Why am I not ending finishing the magic book ever? जब तक हम सबकी सारी ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो जाएंगे और हमको वो तरीका नहीं आ जाएगा कि कैसे अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तब तक हम मैजिक बुक नहीं खत्म करेंगे. सपने आपके उसी से पूरे हो रहे हैं. बाकी की जो सेकेंड बुक हम करते हैं, दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग अस और होल्डिंग अ हैंड एंड टेलिंग अस माइंडसेट कैसा होना चाहिए. सेकेंड बुक इज जस्ट, ऑल द सेकेंड बुक्स आर टीचिंग अस माइंडसेट कैसे होना चाहिए, ठीक है. बट फर्स्ट बुक इज क्रिएटिंग आवर लाइफ, आवर ड्रीम्स. Okay, that's why magic never ends लिखा हुआ है ना, the magic never ends for us also, it's not going to end. ठीक है, so thank you Bitti ji, this is how much we are going to read today, and very very powerful job, Sara. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Hanji, anything anyone wants to share, add, if I've missed anything important. Ritu and yeah. दीप्ति, I want to ask one thing. हाँ जी. वो जो नोट अपन लोग देते हैं ना, once we complete 1 month and then we give that note to, so we have to give that with the note written rupee, मतलब जो भी रुपया देते हैं. I mean, I normally remove it. I remove that because what I do is that I sometimes when I glue it very lightly only on the 4 corners with that glue stick जो होती है, फेवी स्टिक, okay, उसके साथ में.
And sometimes I staple on all the 4 sides. So I take out the staple and then I give it. और वो glue भी इतना कम होता है, उसको हटा के I give. But वो chapter number 5 है, that will come in a while. So that day No, I'll no, let you I know was about it. okay, okay, okay. Yeah, Actually, because otherwise ev- people are going to get confused. Yeah. thank Anji, Aarti, you want to share? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. I had told you my mom used to listen to these sessions and she had introduced it to her sisters also. And one of her sister, she's a very staunch follower of Krishna ji. Okay. So yesterday she called me and she said कि तुम्हारी दीप्ति मैम जैसे बात करती है मुझे ऐसा लगता है जैसे कृष्ण जी भगवान मुझे बता रहे हैं कि ये चीजें हैं और इसको मतलब शी इज बीन फॉलोइंग इट फॉर द लास्ट 5-6 डेज चैप्टर 0 से स्टार्ट किया उन्होंने स्टार्टिंग किया अभी है इस बार? हाँ इसी बार से स्टार्ट अ- किया है उन्होंने अच्छा। एंड शी सेड कि जैसे कृष्ण भगवान आके बताते हैं ना तुम्हारी दीप्ति मैम ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई है जो मैं बहुत टाइम मतलब शी हैज बीन फॉलोइंग इट फॉर अराउंड 30 years बट उन्होंने बोला जो मैंने 30 साल में नहीं सीखा वो मैंने पिछले 3 दिनों में सीखा हाँ। सो थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मतलब उन्होंने बहुत उससे बोला था कल कि बता देना उनको कि जो मैंने Oh, 30 साल में नहीं सीखा वो मैंने tell तीन her दिनों that में I सीखा will pray for her and I'm sending her blessings of a beautiful life, जो भी उनको चाहिए. So this मतलब is उनको ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं मतलब वो बार बार यही बोलती कि जैसे इनकी वाणी में तो कृष्ण भगवान बैठे इनकी वाणी में तो कृष्ण मतलब वो बार बार बोल रही थी ये चीज को कि उनका एक एक शब्द अगर मैं मतलब उन्होंने 4 या 5 बार सुनी आपकी वीडियो वो बोली मतलब मैं इतनी वो हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान जी उनकी वाणी में कृष्ण जी बैठे हैं और वो मतलब बार बार वही चीज मुझे दोहरा रहे हैं जो मुझे सुनना है थैंक यू आंटी. अगर आप YouTube पे आप हमको सुनोगे तो आई रियली वांट टू थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन. बट नो, आई एम अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत लिमिटेशंस हैं, मैं उन पे वर्क कर रही हूँ. सो भगवान का ओहदा देना तो पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अपने तरीके से कि किस तरह से मैं I can add to making this world a beautiful place in my own way, within my own periphery, which could be limiting right now. But yes, आपका अगर हाथ मेरे सर पे रहेगा तो जरूर आगे जिंदगी में जाऊंगी और जो जो मेरे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं लाइफ में तो वो पूरे होंगे. एंड थैंक यू सो मच. I know, but I am nothing close to Krishan Bhagwan. Thank you so much. And wish you the most amazing life and a very, very healthy future years that you really enjoy, like you enjoy your health, your wealth, and all amazing relationships. So thank you so much. थैंक यू मैम थैंक यू सो मच So sweet. And thank you for sharing, Aarti. Thank थैंक यू मैम हाँ जी, Kamla ji. Good morning, ma'am. Are you able to hear me? Can you please, like switch on your camera if you know how to? No, I am in the kitchen. Okay, no problem. Hear me? Okay. No Okay, no problem. issues. Actually, I'm Okay. getting the food ready for my daughters. Okay. Ma'am, I just wanted to know one thing. This healing, yeah, blessing, yeah, wo jo telepathy kind of a thing which you're telling, thinking good for somebody. Can it be? You always say that it should be done in a meditative state. But I Yeah, walk a it has lot. to be done in a meditate. Yeah. But when I walk, I just I don't listen. Before I used to listen to music when I walk. But now when I walk, as I told you, I just only thank. I thanks to my legs, the trees. So that time I even do these blessings to the people who are close to me or who really need it. Is that also okay, or should it always be done in a meditative state? See, telepathy act is to be done in a meditative way. But you're walking and thanking the people in your life and the trees and the road and the pebbles and the stones and the birds and the grass, all that is absolutely making your life brilliant. Please continue doing that. It's a very important thing. In fact, But today I was what about planning to make a video on that, like a short video on telepathy. I will do that in the evening after work.
Okay, but the act of telepathy has to be done with a lot of focus. It has to be directed, focused on the person you're sending it to. So you have to hold that person's very clear, vivid image in your visualization for that person to receive your energy that you are radiating from your life. Okay, that may not happen because when your eyes are open, when you're walking on the road, you're looking at the trees, a car might come in front of you and you love the color of the car. Then there would be a baby who's on a bicycle and riding and you find that baby to be very cute. Then you see a beautiful yellow flower. So while you're saying thank you to the relationships, you are doing all these things also because you are in your conscious state of mind. Okay, so in very conscious state of mind, creation doesn't happen. Okay, of course, your rewiring happens, but creation process, or when you're radiating and focusing your energy towards, like affecting that other life, which might be sitting in Australia or wherever, say somewhere else, for that person, your eyes have to be shut and your body has to be cohesive and aligned with 100% focus towards that person. Okay, that will only happen when you close your eyes. I don't think I know anyone who can send telepathic messages by eyes open. Maybe once they have got that meditative condition and they have gone to that high level, of the fifth consciousness, maybe after that they would be able to do. No, I'm not talking about the real telepathy. I know that is also science which needs to be learned and done. It's not just like you tell and I do it today. What I'm trying to say, suppose I know someone is in health, has a health problem. Can I just say the blessings to heal him and make him feel better while walking? Yes, it might give a 60% effect, but Oh. when you actually do it sitting at one place and sending healing, then it will be faster. Thank you. Yeah. All right. Thank you. Yes, Antim, Pratham. Good Pratham, morning. Antim. Good morning. It's my Gita Gyan exam today. You have your kaun sa exam? Gita Gyan. गीता ज्ञान Yes, ma'am. ये भी सब्जेक्ट है आपका? मैम सब्जेक्ट नहीं है एक्स्ट्रा. अच्छा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, वाह, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये तो बड़ी अच्छी लर्निंग है, सीख के आना, फिर हमको भी सिखाना। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है, थैंक यू सो मच। So okay, Deepak wants to share something with you, but I'll not let it stream on the YouTube. So 1 second.